ये टोनी ना। was Tony 107. Explain ओके। why Tony was resident as not resident in, sorry. Explain why Tony was treated as not resident in the UK for the tax year 21-22. Up to and including the tax year 2021, Tony was a resident in the UK for the tax purposes, spending more than 300 days in UK each year. Tony understands that for the tax year 22-23, she will again automatically be treated as a resident in the UK, but is unsure of her residency status for the tax year 21-22. For the tax year, Tony was neither automatically resident nor automatically resident. Throughout the tax year 21-22, Tony was traveling around the world and did not stay in any country for longer than 30 days, although she spent a total of 50 days in the UK. Tony has a house in the UK, but it was let out throughout the tax year 21-22. She is single, has no children, and stayed with a friend on 50 days that she spent in the UK. Tony did not do any substantive work in the UK. तो 5 में से 3 टाइप्स तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन डेज 50 है ना, 50 दिन मतलब यहाँ पे आ रही है तो 3 टाइल्स को फुलफिल रेसिडेंट है। करने हैं। मेरे हिसाब से तो हो रहे हैं 3 टाइप फुलफिल। 3 में से एक तो उसका मोर टाइम स्पेंड वाला हो रहा है, फिर 5 का 90 डेज के ऊपर हो रहा है, और हम्म। एक था ना उसका प्लेस। प्लेस। 3 तो हो गए। नहीं, लेकिन नॉट रेसिडेंट बोला है। एक्सप्लेन व्हाई टोनी वाज ट्रीटेड एज नॉट रेसिडेंट। इन 21-22। ओके। वो नॉट रेसिडेंट है, हमें बस एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों नहीं है, तो 2 ही टाइप फुलफिल हो रहे होंगे, मतलब है। एक टाइप नहीं 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 फुलफिल हो रहा होगा, वो पक्का ये मतलब वही होगा हाउस का, कि शी वाज नॉट स्टेइंग देयर, ऐसा बोल लेंगे। He was previously resident and was in the UK between 46 and 90 days. He therefore needed 3 ties or more to be treated as UK resident. Tony only has 2 ties, which were being in the UK for 90 days during the previous tax year and spending more time in UK than any other country. That's why she is treated as not a resident in the UK. आगे बढ़ते हैं। List 4 factors which are indicators of Tony being treated as employed in relation to her contract with Droid PLC rather than self-employed. तो ये तो वापस सीधा सीधा आंसर ही है। On 6th of April 2022, Tony was a software developer, accepted a 1-year contract maintain websites for Droid PC. Droid PLC treated the contract as one of employment, with the payments of Tony being subject to payee. तो ये एक हो गया पॉइंट पेई वाला। Tony thought that तो because ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बोलना। okay. However, Tony thought that because she was working from home, her employment status should instead have been one of self-employment. For the term of the contract from 6th of April 2022 to 5th of April 23, the term of the contract is long, which is 1 year. Tony was paid a fixed gross amount of 6,200 a month during the term of the contract. Tony was not permitted to work for any other clients because she was required to do her work personally, not being permitted to subcontract the work to anyone else. इसको खुद से काम करना पड़ रहा था, तो ये एक obligation हो गया। During the term of the contract, Tony worked from home but had to attend weekly meetings at Droid PLC's offices to receive instructions regarding the work to be performed during the following week. During the period 6 April 2022 to 5th of April 23, Tony used her private car। तो एक तो है कि अटेंड वीकली मीटिंग्स के बारे में बोल दिया, तो वो एक ऑब्लिगेशन डाल दिया एक और। During the period 6 April 2022 to 5th April 23, Tony used her private car for business visits to Droid PLC's client. She drove 2,100 miles, for which Droid PLC paid allowance, so reimburse कर दिया allowance को। एंड बाद में बट वो रीएम्बर्स का पॉइंट भी डालना है क्या? डाल सकते हैं, जितने डालना है उतने डाल सकते हैं, एट द एंड ऑफ द
कितने मार्क्स है वो? कॉपी तीन पेस्ट ही मार्क्स का है करना है। ना? 2 मार्क का है, लेकिन कॉपी पेस्ट ही ये सारे करने ना पॉइंट ऊपर से। और तो पढ़ने तो वाले है ही क्वेश्चन, तो बेटर कि हम हाँ, कॉपी एक पेस्ट मिनट, कर। वहां पे क्वेश्चन में, सॉरी, आंसर में, हाँ। contract was for a relevant long-term period. Tony did not take any financial risk. Tony only worked for Dorid PLC. Tony was required to do a work personally. Okay. Dorid exercise control over Tony via weekly meeting and instructions. Okay. On the basis that Tony is treated as employed in relation to her contract with Droid PLC, calculate her taxable income, tax rate into कहीं। Okay, right. हाँ, Rotation of taxable income for Tony, oh, as good as a salary income, रिइंबर्स हमने ज़्यादा किया था, तो जितना भी ज़्यादा किया वो टैक्सेबल है, वो बेसिक वाला हमें एग्जाम्पशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट ओनली leased computer at a cost of 1800 and month. This was used for business purposes. Only leased a computer at a cost for business purposes. तो आई थिंक इस चीज का एग्जाम्पशन तो होना चाहिए।
प्रॉपर्टी इनकम आ जाता है रेंट रिसीव्ड 10,080 rentals of freehold house यहाँ पे क्यों नहीं डालूंगा मैं नीचे डालूंगा रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ सिंगल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन जितने मिलेगा जितने को हमने सिमिलर वॉशिंग मशीन नॉट द कॉस्ट अभी परचेज करेगा उसके बाद परचेज न्यू बैटर है लेकिन the new dishwasher but it was not previously present in the so dishwasher so why it's not being included as a नीचे डालने के लिए notes picture तो यहाँ पे allowed expenditure 870 in respect of a home तो यहाँ पे furnished room दिया है Set 22.3 Tony rented out a furnished room to her main resident to offer main residence during the year. She received rent of 8,180. The allowable expenditure of 817 square of the room. Sure lower of set करना होता है. A part की 8580 870 580 plus
ये हो गया। लास्ट में अदर इनकम आ जाता है, उसमें Tony inherited 1 lakh of bills paying interest at rate of 3%. The inheritance was valued at 1,20,000. That doesn't matter, nominal value दी गई है. It's a paid half yearly. June to December ऐसे उसने पहले ही सेल कर दिया. Tony sold the gilts on 30th of November. चलो good. July, August, September, October, November. 5 months. July, August, September, October, November. 5/12. नोट relevant. just फटाफट के देते हैं. ये भी हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. इसमें टोटल मिलता है ज्यादा कुछ होगा. प्रीमियम कौन प्रीमियम बॉन्ड प्राइस में आता है इंटरेस्ट ऑन द मैच्योरिटी सेविंग्स सर्टिफिकेट फ्रॉम एनएसआई. इनकम ये हो गया. टैक्सेबल इनकम ढूंढना है. इनकम yeah, I think 70995 should be the answer. Let's check. 70936 60 rupees. क्या गलत है? अरे वॉल्यूम लो तब देखा नहीं मैंने. Property income is 9670. सर यही कुछ रह गया होगा. एक मिनट हम अलग से चेक कर लेते हैं एक बार. 380. मैं भी 380 माइनस करा. 380 माइनस करना था मैंने. हाँ मतलब सब करने के बाद भी अगर गलत ही आया तो ये छोटी मिस्टेक. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड बाय.